Good morning, students. We will be starting off with an excellent piece of poetry, that is a thing of beauty. A thing of beauty, written by John Keats, one of my favorite one. देखो, the extract which is given here is a short part from the poem Endymion. बहुत लंबा एपिक पोएम है एंडोमियन. ये जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है उसमें से है. इफ वी टॉक अबाउट जॉन कीट्स, तो व्हाट वी फाइंड आउट? John Keats was born in 1795 till 1821. So 26-27 years की एज में ही जो है डेथ हो गई थी जॉन कीट्स की. लेकिन जितनी अच्छी, जितनी डेप्थ में पोइट्री जॉन कीट्स लिखते हैं, उतना कहीं और या किसी और के राइटर में इतने इनोवेटिव क्रिएशंस हमको देखने को नहीं मिलते हैं. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन कीट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट बिलोंगिंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स. अब लाइक लॉर्ड ब्रैन, शेली, इन लोगों के साथ में जो है हमारे जॉन कीट्स जो है वो एज को शेयर करते हैं. मूविंग further, although his poems were not generally well received by critics during his lifetime, but by the end of 19th century we see the poet had become one of the most beloved poem of English poets. He had a significant influence on a diverse urge of poets and writers. बहुत डिफरेंट जो है जॉन कीट्स की राइटिंग्स होती हैं. अपनी लाइफ टाइम में ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पाए, लोगों ने बहुत पढ़ा नहीं, क्रिटिक्स ने बहुत गलत तरीके से वैल्यूट करा इनकी राइटिंग्स को, लेकिन बाद में जो है बहुत पॉपुलैरिटी इनको मिली. When we talk about the outline of the poem, हम क्या देखते हैं? A thing of a beauty is an excerpt from his first epic poem, Endymion. Endymion is a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a young shepherd who lived on Mount Latmus, वहां रहता है वो, he had a vision of the Scythia. कौन है? गॉडेस ऑफ मून. उनके प्रति एक अट्रैक्शन वो फील करता है. एंड he like enacted his enchanted youth, resolved to seek love out of that, and so he wandered in forest, up and down, everywhere. The theme of the poem which is given us here, वो extract जो यहाँ हमको दिया गया है, उसमें हम देखते हैं कि निकल के आती है that ब्यूटी, यूथ, इन सब के बारे में बात कर रहा है. Keats loved beauty to the extreme that his almost writing occupied this thing. And this extract voices his eternal love and beauty towards this. He in this poem want to explain that there are lots so many beautiful things which are being made by God. They are given as a gift to human being. He also explains that this entire world is full of crisis, miseries. So this is how he describes this beauty in life. So many things are described in this poem
differently. We will be discussing about them in phases. Number one is a thing of a beauty is a joy forever. A thing of a beauty is a joy forever. Number one point he is discussing about this. How he proves this? According to Keats, a thing of beauty is a constant source of joy. Its beauty keep on increasing. It never fades, nor will it ever pass into nothingness. It gives us peace and a sleep full of sweet dreams. Like we are bound to the beauties of the earth. ना ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे? कीट्स ये बता रहे हैं कि कोई भी सुंदर चीज जो होती है वो हमेशा ही हमें हैप्पीनेस देती है. और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है ना. हमें कभी भी नहीं लगता कि वो चेंज हुई है. और यही सुंदरता हमें पृथ्वी से जोड़े हुए है, इस अर्थ से हमें जोड़े रहती है. Second important thing which a poet is talking about is things that cause sufferings and pain. Things that cause sufferings and pain. कैसे? We suffer from malice and disappointment. We lack good human qualities and noble natures. These things make our life gloomy. Gloomy means उदास बना देती हैं हमारी जिंदगी को. We also develop unhealthy and evil ways. They cause us nothing but sufferings and pain. बहुत सारी चीजें हैं जो ये सब करती है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ सैडनेस. ब्यूटी मूव्स अवे द पाल ऑफ सैडनेस. ये क्लियर करता है पोइट हमको. कैसे? ही सेज दैट in spite of all these sufferings, mankind has a hope. He has a hope. So here we see that beauty moves all the pall of sadness. जितने भी movements हैं जो which are full of sadness, उन सबको जो है poetry या nature दूर कर देती है. What here Keats want to say that in spite of all these sufferings, mankind has a hope. A thing of beauty never disappoints us. It never devalued. Some shape of beauty removes the pall of sadness. Pall of sadness, moments of sadness, उनको खत्म कर देती है. And sufferings that cover our spirit. So this is how beauty is helpful for us to come out from all the problematic moments. Next important चीज जिसकी बात हो रही है that is things that are sources of happiness. Things that are sources of happiness. Now what exactly here poet is describing is कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सुंदर होती हैं, हमें सुंदरता देती है, दिखाती हैं. सन है, मून, ट्रीज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, दे आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. These beautiful things of nature, they make our life sweet, soothing as well as happy. So they make our life beautiful. Fifth important thing which the poet is talking is
Nature's endless fountain of joy. Nature's endless fountain of joy. Now what here they are telling that these beauties of nature and lawyers, then all lovely tales that we have heard or read. Nature is an endless fountain pouring into us a heavenly immortal drink. ये हमें describe कर रहा है. So if we talk about the main points of the poem, what we found? We found that a thing of a beauty is a joy forever and its value never decreases. A thing of a beauty is a shelter for us. It gives us a sound sleep full of sweet dreams. Our sadness, evil nature and unhealthy ways make our living quite unpleasant. But a thing of a beauty removes the pall of sadness from our spirits. Trees provide a shady boon for sheep. Clear, small streams provide a cooling, healthy shade, covered with thickest against the hot season. Daffodils, they bloom along the green surrounding. Beautiful musk roses bloom around the mid-forest thickets. The beauty provided by these beautiful objects of nature is lovelier than all the stories that we have heard or read. Nature provides us an immortal drink that pours into our hearts right from the heaven. ये सारी चीजें जो हैं ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. When we move further to the description of the stanzas, पहला स्टेंजा आप पे आते हैं हम. First stanza is talking about a thing of a beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. क्या डिस्क्राइब कर रहा है इसमें पोएट? देखो, देर आर फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे फॉरएवर है. फॉरएवर मीन्स ऑलवेज. लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स ब्यूटी. पास इनटू मीन्स टर्न इनटू, चेंज हो जाएगा. नथिंगनेस, हेयर नथिंगनेस मीन्स अ थिंग ऑफ नो वैल्यू, बेकार चीज. Bower, bower is a pleasant place in the shade under a tree. Quiet, quiet means silent. Now, what poet is describing here? Poet कह रहा है a thing of a beauty is a joy forever. Its beauty always goes on increasing and on increasing. It will never be reduced to nothingness. A thing of a beauty provides a pleasant shelter, a place in the shade under a tree for us. It provides us a sound sleep. It is full of sweet dreams and quiet and effortless breathing. Like we are very much happy. हम बहुत खुश होते हैं यहाँ पर जाकर या पहुंचकर. So this is how they have Keats have started the poem. When we proceed to the next stanza, what we find? बहुत अच्छा लिखा हुआ है पोएट ने. Therefore on every morrow, क्या था? Are we breathing a flowery band to bind us to earth? Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall
from a dark spirit. I want you to note down the hard words like morrow here means morning, yeah, next day. Breathing means weaving into a word, गूथना जिसको बोल देते हैं ना, गुथा हुआ है आपस में. Band here means a narrow stripe. Bind है bind, here means attach. Spite है spite, it means malice, द्वेष, malice. Despondence means disappointment. Inhuman means a thing against human values. Dread means lack of. Noble means very great, lofty. Gloomy means sad. Dark and evil. Searching here means looking for. In spite of all, यहाँ मतलब इन सब चीजों के बावजूद. और moves away है, that means removes. Dark, यहाँ dark अंधेरा नहीं है, यहाँ dark sad है. Spirits means our inner soul. क्या बोलना चाह रहा है इस पैरा में? he wants to describe that therefore every next day we are weaving a flowery band to bind us to the earth. हम हर सुबह एक नया बंधन बनाते हैं अपना अर्थ से. देर इज अ डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन ऑल अराउंड. मान रहा है, किड्स इस बात को मान रहा है दैट ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ माइजरीज, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है. अपार्ट फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, अपार्ट फ्रॉम दिस डिसअपॉइंटमेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस रिजेक्शन, नेचर हेल्प अस टू मूव अराउंड आगे जाने के लिए. Very few have a noble heart here. Sad days, evil and unhealthy ways always dominate our lives. But in spite of all these things, some beautiful things remove the cover of sad feelings from our heart. The beauty of natural objects takes away the gloom, the sadness from our sad heart. तो we क्या कर रहे हैं हम रोज ना? what we are doing every day? We are weaving a flowery word every day to bind us to the beauties of this world. Up here he is also talking about the bad and evil things that we possess in us. अब हम में क्या है? Like we suffer from disappointments, lack of noble qualities and unhealthy and evil ways. ये सारी चीजें हैं that we possess, है ना? और मतलब क्या चीज है जो हमें दूर ले जा रही है ना? या इससे ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर विद अस व्हिच टेक्स अस अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स एंड द malaise which we follow in this world. So this is how we ended up the second stanza. When we move to the third stanza, what we find here in third stanza, like he's explaining को कौन सी चीजें हैं, like such as the sun and the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. ना इस बार में क्या बता रहा है पोएट बता रहा है like now the poet now goes on the list of these objects of beauty. He says that the sun, the moon, old and young trees which provide shade to sheep, the daffodils, the greenery surrounding them, the cool and clear streams which provide replica in the heat of summer, and the bushes growing in the forest with musk roses, they are blooming in between them. They all are the eternal source of joy and pleasure which human being receives through nature. सारी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ये वो सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग को कौन देता है, जो गिफ्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए. किसके थ्रू? गॉड के थ्रू ये सारी चीजें हमें मिलेंगी. लास्ट स्टेंजा जो है हमारा बहुत ब्यूटीफुल स्टेंजा है. एंड सच टू
in the Gardenia of the Dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. बहुत डेप्थ में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनो इसको. The poet adds on further to its list. According to him, there is a beauty even in death. Death में भी सुंदरता है. कैसे? He finds beauty in imaginary stories people have made about our dead ancestors who were deemed as heroic and mighty. The poet, among such things of beauty, as they have a sublime effect on human being, human spirit. All beautiful things like an endless fountain from the heaven sent by God himself so that mankind may enjoy these precious gifts. मरने के बाद हम अच्छी अच्छी बातें याद रखते हैं ना, बेकार बातें थोड़ी याद रखते हैं किसी के बारे में, तो वो एक पॉजिटिविटी की तरफ हमें ले जाती है. तो यही सुंदरता है डेथ के अंदर. That after the death of any person, we only want to remember the positive qualities inside it. बुराइयों की हम बात ही नहीं करना चाहते. So this is how our poem here describes lots of many things. To बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें हमारी जो पोएम है ये बता रही है. So this was all about the chapter. We will be proceeding towards the question answers. When we talk about question answers, they come in a simple way, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ होता है, वही कंफ्यूज करते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. सिर्फ यही चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो जनरली ये आता है, हाउ इज द थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. John Keats, a great romantic poet, considers that the thing of a beauty is a joy forever. Because it is a constant source of happiness and pleasure. Its loveliness increases every moment. A thing of a beauty is never devalued and it never passes into nothingness. सिर्फ इतना ही हमें बताना है. Second question बनता है, how does a thing of a beauty keeps a bore quiet for us? Keats is rich in sensuous imagery. Nature provides us with things of rare beauty. A pleasant place in the shade under a tree provides us a quiet board. Similarly, a thing of a beauty transports us to peace and security. We enjoy a sleep of dreams, health and peace. इतना ही बताएंगे हम इसमें. इसी पैरा का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ डू वी बाइंड अस टू अर्थ एवरी मॉर्निंग. Like all romantic poets, Keats stresses the unbreakable bond of man with nature and the earth. The beauties of earth fascinates man. Every object of nature is a source of beauty and happiness. Every day we are weaving a wreath. Through these beautiful things, this flowery bond binds us with the earth. Nextly, वो पूछता है that what are the things that gives suffering and sadness to man. देखो, मतलब इसमें हम लिखेंगे that man himself is the root cause of its woes, its problems, है ना, its sadness. We suffer from malice and distress. But unfortunately, we lack human qualities and it makes us inhuman. Our life becomes gloomy. We cultivate unhealthy and evil ways. Now, all such things bring misery and suffering to man. एक और क्वेश्चन आता है, लाइक नेम द थिंग्स ऑफ नेचर दैट आर कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी, जो लगातार हमें देती चली जाती है. द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर एंडलेस. द मून, द सन, trees old and young,
beautiful daffodil flowers, green surroundings, are made of such beautiful things. Similarly, small streams of clear water, green ferns, thickets, musk roses, and there are some other things of beauty. Now, all such things of beauty, they are a constant source of joy for us. एक बहुत important question है, dead से related, पढ़ा था हमने अभी. What is Grenadier associated with the mighty deads? क्यों भाई, क्यों deads के साथ associate करते हैं इसको? देखो, mighty deads were people of great power, authority and grenadier. They were wealthy, brave and awesome people. They are dead in their graves, but their grenadier and glory survives. वो मर गए, लेकिन the deeds done by them, they are still here on this earth. So we can say indirectly they are alive. So it is believed that they will be handsomely rewarded on the doomsday. John Keats was a Christian, and in Christianity, it is believed that they believe in existence of body, not in the existence of soul. उनके according, that is why they preserve the body. अब वो क्या कहते हैं कि on the doomsday, Jesus Christ will come himself and they will be rewarding and punishing the people according to the deeds done by them in their life. है ना? तो वो कह रहे हैं कि लास्ट में डूम्सडे, उसी को कहते हैं डूम्सडे, वही आखिरी दिन होगा जब जीसस क्राइस्ट खुद आके सबको पनिश करेंगे या अच्छे ही जो कर्म किए होंगे उसका उनको फायदा मिलेगा, है ना? ये एसोसिएट है इससे. आगे देख, एक क्वेश्चन ये आता है कि दिस व्हाट इज द पर्पस या व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट इफेक्ट. क्या इफेक्ट करता है? देखो, द ब्यूटीज ऑफ नेचर नोज नो लिमिट. नेचर इज एन इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय टू मैनकाइंड, अ फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय एंड immortality. It pours into the heart and soul of man. It flows and pours right from the heavens brim. ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं. So these are some short answers questions जो कि जनरली पूछे जाते हैं. एक और पूछा जाता है कि मैसेज क्या दे रहा है, ना, व्हाट इज द मैसेज of the poem A Thing of a Beauty. So we can say that the message that the poem conveys is that A Thing of a Beauty gives us endless joy. It helps us come out of sadness and hopelessness. The memories of such a thing is a source of everlasting happiness. यही मैसेज है जो पोएम हमको दे रहा है. अब कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम देखते हैं बोर्ड के पॉइंट से. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम. दिस लाइन इज इनिशियली हम बताएंगे कि दैट दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी. The beauty is everlasting, as it creates an eternal joy in the beholder. It is an endless fountain of joy that is immortal as a drink pouring down on us as a water of joy from the edges of heaven's cliff. The eternal joy is like a bliss of heaven on earth. The poet says these words in order to explain the nature of the pleasure and joy that is created
when a beautiful object is seen by a beholder. The poet here affirms the truth that beauty is not a thing that is ephemeral, but it is eternal. The pleasure we receive is perceiving a beautiful object is a gift that is worth treasuring, as the joy removes the gloom in our mind. It distracts our mind from the pains, from the sufferings of life. We'll see the beautiful thing, and though for few moments only, it helps us to forget all the problems of life which we are in or which we are facing. ना उन सबको हटाने में, दूर करने में क्या है, ये हमारी मदद करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो बनता है एनालाइज द माइथ ऑफ एंडोमियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. है ना, ये हॉट थिंकिंग ऐसे में आ जाता है क्वेश्चन. देखो, द पोएम इज एन एक्सक्रीट फ्रॉम जॉन कीट्स first epic poem Endymion, which was published in 1818. The title of this poem is taken from the very first line of Endymion. According to Greek mythology, Endymion कौन था? He was a handsome young shepherd who lived on mountain Latmos of Asia Minor. He was in love with the goddess of moon, who was also known as Cythenia. Now, the enchanted shepherd resolved to seek her in his admiration. The poet echoes the pleasure of the shepherd as he wanders through the forest and finds pleasure in beholding the beautiful sights of nature. That beauty can create joy in the soul that will last forever, is what is conveyed in the poem. यही तो बताया जा रहा है हमको पोएम में. The nature with its beauty, the sun, the moon, the daffodils, musk roses, है ना, it gives to life a new meaning and significance. These are the things which are being described by the poet to us. Now let us have a talk about the poetic devices used in the poem. देखो, when we talk about this poem, the poem is rich in images, and the use of various poetic devices we can see here in the poem. Metaphor has been employed in Moves the Pall, where our soul steeped in sadness and hopelessness are compared to dead bodies covered with a shroud. In the metaphor Immortal Drink, a feeling of immense joy has been compared to a drink that flows down from heaven's brink, like an endless fountain. There is a use of alteration also: noble, nature, simple, cheap, cooling, covered. Repetition हो रहा है ना साउंड का बार बार. The poem abounds in the use of imagery too, like as in flowery band, daffodils with the green world they live in clear rills, endless fountains, है ना. इन सारी चीजों में हम देखते हैं इमेजरी को भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है. एक और क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के उससे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो है, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर.
This is what John Keats say in this poem. Now, do you think in the present time of acute stress and violence, proximity to beautiful things can lead men to everlasting happiness? क्या आज के टाइम में जब हम देखें तो उस टाइम की ये जो पोएम्स लिखी हुई हैं जस्टिफाई कर पाएंगे हम आज के टाइम में भी? ये पूछना चाह रहा है पोएट। देखो, a thing of beauty gives us permanent happiness. When we look at objects of beauty, we feel happy, and the lasting impression that such objects leave on our mind continues to give us pleasure even when they are no longer in our sight. नहीं दिख रहे हैं हमको, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल हम कहीं घूमने जाते हैं, एक बहुत सुंदर सीनरी दिखती है या बहुत सुंदर प्लांट देखते हैं या बहुत अच्छी सी ट्री है या जो स्ट्रक्चर है किसी पर्टिकुलर चीज का वो बहुत अच्छा है, तो तब जब हम आ जाते हैं वहां से तो क्या हम चीजों को भूल जाते हैं? नहीं, हमें तो सब याद रहता है ना, सब ध्यान में रहता है हमको। वही बात, तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो हम भूलते नहीं है। ये सारी चीजें हमेशा ही हमको याद रहती हैं एंड दे गिव अस प्लेजर। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्यूट स्ट्रेस एंड वायलेंस, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी attain even greater significance. When our mind is anxious and troubled, the very sight of beautiful things often comes as a relief and provides us comfort and happiness for that moment. Appreciating beautiful things is like appreciating God, because all those things are given to us by God only, who has bestowed them upon mankind as a gift so that we can derive happiness and solace from them. Proximity to beautiful things brings us closer to the Creator. And who is Creator? God is Creator of everything, है ना? And He has created these beautiful things to take us out from the problems. Therefore, it is sure to bring that everlasting happiness at all times helps us to come out from the problems as well as miseries of life, है ना? तो ये सारी चीजों से हमें बाहर निकालने में जो है वो ये सारी ब्यूटीफुल चीजें जो हैं वो मदद करती हैं। अब ये सुंदर चीजें जो हैं, लाइक हाउ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प्स अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ, क्या क्या रोल होता है इनका? देखो, वी डिराइव कंफर्ट एंड हैप्पीनेस where we look an object of beauty. The everlasting impression they leave on our mind is a source of permanent joy. They provide us relief from our everyday's problem, troubles, and helps us to make ourselves happy. हमें और खुश रखने में, प्रॉब्लम से दूर रखने में ये हमारी मदद करता है। एक और लाइन है पोयम में, लाइक व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? क्या इफेक्ट क्या होता है इसके और क्या है? द एंडलेस फाउंटेन refers to the beauty of nature. It is a boon from heaven itself. Our life is full of miseries, but the infinite delight that we get from the beautiful things of nature, they give us motivation to continue our journey in this world. मदद करता है हमारी, है ना? इसीलिए हमें ब्यूटीफुल चीजें जो है वो हमारी मदद करती है अपनी प्रॉब्लम से, माइजरी से बाहर आने के लिए। यही मैसेज है जो यहाँ पर पोएट हमें देना चाह रहा है। पोएटिक कनेक्शन भी प्रूव करना चाह रहा है।
between human being and God. He wants to express or he wants to tell that God is always worried about his children. His children be human beings, animals, this nature, everything. We all have to live together by making a balance with each other, है ना? बैलेंस बनाने का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसकी कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ट्रीज, एवरीथिंग. जैसे जैसे हम ये जो स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होता जाएगा, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी. यही बताना चाह रहा है कि जब तक ह्यूमन बीइंग विल लिव इन हार्मनी विद नेचर, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम बहुत आराम से जिएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी हमें. प्रॉब्लम शुरू होती है जब ह्यूमन बीइंग के डिजायर्स, एस्पिरेशंस बढ़ती चली जाती है. हम एक पेड़ का फल खा रहे हैं, हमें भूख लगी है तो समझ में आता है ना, पक गया हम खा लें. लेकिन हम कच्चे पक्के सबको तोड़ रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है. ओवर राइपन फ्रूट्स है, अंडर राइपन फ्रूट्स है, हम सबको तोड़ रहे हैं बिना कुछ देखे अपने फायदे के लिए, है ना. और फिर उनको आर्टिफिशियल तरीके से पका के बेच रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए भी बेकार है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं. जितना ज्यादा ह्यूमन बीइंग नेचर के अगेंस्ट में जाएगा, उतना ज्यादा पनिशमेंट नेचर हमको देगा. सो वी मस्ट लिव with harmony with the nature.